जब हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर इंडियन इकोनॉमी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, सिंक्रोनाइज्ड मॉनेटरी टाइटनिंग, दिस रिजल्ट्स इन सी, it forces India to increase interest rate because otherwise there is fear of capital outflow. ये कहानी अभी पिछले स्लाइड पे सुना रहा था तुम्हें। अब एक बात समझना इसमें कि हमारी हालत कैसे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारी हालत इसलिए गड़बड़ हो जाती है, सुनना ध्यान से इस बात को, हमारी हालत इसलिए गड़बड़ हो जाती है क्योंकि अनलाइक अमेरिकन्स, अनलाइक अमेरिकन्स, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम वेयर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट लो, अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई इन इंडिया। तो हमारी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ ये सिचुएशन भी नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट नीचे है, अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर है काफी। एक तो ये बात हुई, और बताता हूँ एक और दिक्कत क्या है। एक और दिक्कत ये है दैट अमेरिकन्स हैव फिक्स्ड देयर टारगेटेड इन्फ्लेशन बिटवीन 0% to 4%। 2% इज देयर टारगेट एंड देन प्लस माइनस 2%। तो अमेरिकन्स के लिए इन्फ्लेशन 4% के ऊपर गया, उनका बीपी हाई। अब अमेरिका का इन्फ्लेशन पहुंच गया 8%, 9%, तो सोचो उनके टारगेटेड रेट से 4-5% ऊपर है। If America's inflation goes up to 8%, 9%, it is going 4-5% above their targeted inflation. All right. So they will be more worried about inflation. Their central bank will be more hyperbolic. Their central bank will be saying, कुछ करो भाई, inflation कम करो, हमारे जो requirement है उससे 5% ऊपर है, upper limit के भी। और एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है नहीं, लोगों को बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं फेस करना पड़ रहा, बढ़ाओ जम के इंटरेस्ट रेट, चिंता की क्या बात है। लेकिन हमारे साथ सिचुएशन नहीं है वैसा। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, इक्वली इंपॉर्टेंट, आवर इन्फ्लेशन नेवर वेंट अबव 8%। The maximum we had is 7.5%. But what is our tolerance level? Our tolerance level is up to 6%. 4% targeted प्लस माइनस 2%। तो इन्फ्लेशन जो है, अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे टॉलरेंस लेवल के 2% ऊपर भी नहीं गया है। लेकिन हमें भी उतने ही जबरदस्त तरीके से मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ रही है जैसे अमेरिकन्स कर रहे हैं। नहीं तो हमें डर है कि हमारे यहां से करेंसी बाहर चली जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं। I hope you understand the dilemma. So for India, the dilemma is, even though our interest rate is not as high as comparatively what Americans are facing or Europeans are facing, and even though our unemployment rate is higher than what the Americans have, yet we have the pressure that currency goes out of India, and due to that we have to increase our interest rate more than proportionately. It's hurting us in that sense. ये हमारे लिए थोड़ा दुख की बात है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। It's not that we can help something here right now. We have to do it, but I'm just saying that just to highlight to you, ये मेरा एनालिसिस है जो आपसे शेयर कर रहा हूं कि इंडिया के लिए फिर वो कंफर्टेबल पोजीशन नहीं रखता। That India ideally would not have increased interest rate so much because we did not face that issue. हमारा इन्फ्लेशन 7% है, 7 ठीक है, 7.5 है, यही हाईएस्ट गया, तो 6 के तो 1-1.5% ऊपर गया ना। अमेरिकन के लिए 4 के 5% ऊपर जा रहा है। 4% is their tolerance level, 9% is what their inflation is reaching. So obviously Americans are more worried, and since they are more worried, they are pushing the accelerator, increase the interest rate. अब उनके धक्का मारने की वजह से हमारी गाड़ी उनसे बंधी हुई है, हम भी जोर से भाग रहे हैं। तो ये एक हमारे साथ ट्रबल फैक्टर है that we have to take care of. Now see, when we talk about the factor up here, another is currency depreciation and current account deficit widening. ये है मॉनेटरी टाइटनिंग के रिजल्ट एक्चुअली। दैट ये मॉनेटरी टाइटनिंग जो है वो एक रिजल्ट क्रिएट कर रहा है। करेंसी डेप्रिसिएशन क्यों कर रहा है? क्योंकि इंपोर्ट्स कॉस्टलियर हो रहे हैं। सुनना मेरी बात, अब ये ड्यू टू सप्लाई साइड inflation, price of crude oil, fertilizer,
से एडिबल ऑयल, इंडिया के लिए तो बहुत जरूरी है ये चीजें, एक्सेट्रा, हैव इंक्रीज्ड, which implies value of imports have increased, but due to recession in global economy, as a result of monetary tightening, there is decrease in exports, leading to high current account deficit. And you know, this current account deficit is worsened by currency depreciation. जैसे ही आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हुई, इमीडिएटली क्या होगा, आपके इंपोर्ट महंगे हो गए, तो पहले से ही इंपोर्ट महंगे थे, अब ये इंपोर्ट और महंगे हो गए, और साथ में आपका एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाहर के देश जो खरीद सकते थे वो स्लो डाउन या रिसेशन में है, तो नतीजा क्या होगा, नतीजा वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडनिंग. You know, the exports are not increasing as much, the countries to which we sell are not in a position to buy, and imports are increasing a lot. Why are the imports increasing? Because the price of imports is rising, so the value is rising, and due to money flowing abroad, अमेरिका ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, उसकी वजह से जो पैसा बाहर गया, उसके वजह से हमारा करेंसी डेप्रिशिएट होने लगा, उसने इंपोर्ट्स को कॉस्टली बना दिया. तो दो कारणों से इंपोर्ट कॉस्टली हुए, जो हमारे इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ा देता है और करंट अकाउंट डेफिसिट की हालत खराब करता है. कारण एक, अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसके वजह से मनी फ्लो अमेरिका की तरफ गया, जिसके वजह से हमारे करेंसी पे डेप्रिसिएशन हुई, और हमारे करेंसी के डेप्रिसिएशन ने हमारे इंपोर्ट्स को कॉस्टली कर दिया. कारण दो, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन हुआ, इंपोर्ट्स लाइक फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, सीमेंट, say things like rare earth, they all become costlier. All these things we need for our industry and for food security and agriculture, and that results in making our imports costlier. That is the challenge we have in India again, especially India and emerging markets in general, and due to that, current account deficit, imports becoming higher because of this slowing economic growth and monetary tightening that happens. Of course, monetary tightening का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना. Geopolitical frictions क्या हैं, रशिया यूक्रेन वॉर, then entire Europe going towards Ukraine, disconnecting ties with Russia, resulting in a problem where global supply chains get disrupted and the world is in uncertainty. That uncertainty further disrupts businesses across the world, and then inflationary pressure created due to supply chain disruption and supply side rise in price of food rising, price of commodities rising like aluminum or metals and minerals. All that becomes the problem part. India has high tolerance compared to America because we are a developing country. Developing countries expect higher inflation. We will have high growth also than America. No, that is why it happens like that. All right, FDI is long term and FII is short run. I not forever. इस बात को करेक्ट कर लेना, नहीं तो गलती रह जाएगी forever. All right, FDI is always long term and FII is short term. Volatile money है, hot money कहते हैं FII को, और FDI short term, long term होता है. ये ध्यान में रखना जरूर. All right, monetary policy everywhere will target interest rate, and these interest rates are always the yield on bonds. All right, that is what you should keep in mind. Madhusudan, Meena, I was answering your question. तुम जरूर लेट से ज्वाइन किए हो मुझे गोविंद रघुवंशी. मैंने तुम्हें बताया था कि अगर यूएसए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टर्स यूएसए जाएंगे
उससे इंडिया के करेंसी की डिमांड कम होगी, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी और इसीलिए इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी। आई होप you get the point, Govind, now. All right. जय हिंद, all of you, happy to see you all here. अब चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को. The next thing that we now talk about is impact of COVID-19 pandemic in India. What is the impact that we see on COVID-19 pandemic in India? How do we see India emerging out of it, and how have things happened in Indian context? Now, मनोरंजन भटक जाओगे, इशू ऑफ पेमेंट टू रशिया पे अभी मत जाओ. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब वहां जाना. अगर मैं ये पढ़ाऊंगा तुम उधर जाओगे ना, तो मैं भी भटक जाऊंगा, तुम भी भटक जाओगे, मत जाओ उधर. लेट्स सी दिस. सो व्हेन वी से impact of COVID-19 pandemic in India, first is contraction in fiscal year 2021. No doubt about it. When I say contraction in fiscal year 21, it means 2020-21. First technical recession in India. Technical recession का मतलब होता है 2 successive quarters in recession. Technical recession means 2 successive quarters in recession. That is technical recession. So now this was first technical recession in India, and it created 5th annual recession in India. 5वीं बार भारत को साल भर के बाद जीडीपी ग्रोथ को कम देखना पड़ा. सो 5th annual recession in India and first technical recession in India. That is what COVID-19 pandemic did in Indian context. It reduced our exports a lot, it reduced productivity a lot. Overall, the recessions continued. The second thing that it did, that was the result, was we had a recovery in 22 despite Omicron variant, because the Omicron variant gave mild symptoms and the recovery was quicker, and also Omicron variant was not as much aggressive in nature. Most importantly, it was not lethal. मार नहीं रहा था लोगों को वैसे, तो लोगों की रिकवरी क्विक हो रही थी और इसीलिए हमें लॉकडाउन्स की जरूरत नहीं पड़ी, इकोनॉमी को वापस क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ी. ऑलराइट, दैट वाज द एस्पेक्ट. No, we cannot focus on FDI increase to keep interest rate in check, Aniket. Can't do that. All right. No, global recession did not lead to monetary tightening, Abhimanyu. Global inflation led to monetary tightening. तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो. मैंने रामायण की कहानी सुनाई, तुम पूछे कृष्ण भगवान कौन थे. इधर मत जाओ ऐसे. मॉनेटरी टाइटनिंग के वजह से ग्लोबल रिसेशन होगा, अभिमन्यु. ऑल राइट, वो ध्यान में रखना. Now, let's see this here. Yes, if RBI increases interest rate, then all interest rate increases. Now see, let's see this now. So recovery in 22 started despite Omicron variant, and these things that I have written here are reasons for recovery. The recovery happened quickly because of vaccination, localized lockdowns and mild symptoms of people. Also recovery happened also due to proactive policies proactive policies by government with barbell strategy, that is minimizing the loss and maximizing the profit. Minimizing the loss and maximizing the profit. So proactive policies of the government were there. बारबेल स्ट्रेटजी पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने यूज किया था कि जब खतरा बढ़ा हुआ था तो सरकार ने कोशिश की लॉस मिनिमाइज करो, लोगों की जान बचाओ, इंडस्ट्रीज को कोलैप्स करने से बचाओ, और फिर धीरे धीरे जैसे खतरा कम हुआ फिस्कल एक्सपेंशन किए, मॉनेटरी एक्सपेंशन किए, सो दैट इकोनॉमी कैन बी गिवन एन impetus. Then
the survey claims that there is full recovery for Indian economy, but add a point in that, ये मैं add करवा रहा हूं आपको, but not observed in every sector. Not observed in every sector. The contact intensive sectors have done well. You know, restaurants, hotels, movie going, theater and all, transportation, trading, traveling. These are contact intensive sector जहां लोग मिलते हैं ज़्यादा, इकट्ठा होते हैं, ये अच्छा कर रहे हैं क्योंकि बीमारी कंट्रोल में रही है. But there are other sectors which are still not fully well developed. For example, we still see agricultural wages have not recovered to the pre-COVID level. We still see that industrial worker layoff has not yet gone away. We still see that the wage rate of unorganized sector workers has not yet come back to the level of the pre-COVID. तो ये नहीं है कि हम पूरी रिकवरी कर गए और चिंता की कोई बात नहीं, सब अच्छी हालत में, सब लोग अच्छी हालत में नहीं है, ये बताना चाह रहा हूं. So if survey claims that at a macro level India has come back to where it was, completely correct. No doubt in that. At a macro level, the GDP level is higher than where it was. Industrial output level is higher than where it was. Agricultural output has kept growing throughout. These are all good news, no doubt about it. But at micro level, wage rate in agriculture, after adjusting for inflation, wage rate for unorganized sector labor, after adjusting for inflation, outflow of investments from India in the financial markets, current account deficit being high for India, these are some trouble points that we face. So we got to be careful that let's not sound complacent and let's not say that full recovery has been made. So just to make sure that you have an understanding, these are the headwinds if you see. Conflict in Europe, local events in India, that is supply chain disruption, local weather conditions like unseasonal rain, extreme heat conditions, all this created inflationary tendencies in India also. So by chance if somebody says that you list for us, if somebody says you list for us some of the challenges that still persist in India, one is high current account deficit, second is inflation is persistent. These are macroeconomic challenges of India. ये अभी भी हैं भारत में, गए नहीं हैं, कंट्रोल में आ रहे हैं, सिचुएशन थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन बचे नहीं हैं अभी हम लोग पूरी तरह से. थर्ड इज combined fiscal deficit of center and state government above 7.5% of GDP. So it is something we got to be careful about. We got to know what's happening. We got to know where we are doing or what we are doing. We need to make sure that we do well in these activities, क्योंकि ये हमारे ऊपर खतरा है. अभी देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम इन खतरों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से टैकल करें. कैसे वो बेहतर तरीके होंगे मैं आपको अगले चैप्टर्स में बताऊंगा. that how इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन भी दिया है और अच्छे सजेशन दिए हैं. सो इन नेक्स्ट चैप्टर्स आई सजेस्ट, एक बात और तुम सबको सजेस्ट करूंगा, just make sure that you cover each and every chapter with me so that there is no gap left and don't have any inertia of lethargy. वो inertia of lethargy होती है, 2 चैप्टर देख लिए, तीसरा बाद में देखेंगे, उस नौबत को मत आने देना. I will keep the discussion precise and effective as I'm trying to do, but I need you to make sure that you have gone through things because that will allow us to give you a wholesome input. In budget also I saw that initial lectures you were seeing it, gradually the lethargy comes in, so उससे बचना थोड़ा वो ज़रूरी होता है. Then when we talk about things, so these are some macro challenges that India faces. Then micro challenges, wage rate, real wage or real output not yet back at the pre-COVID level. In many sectors like landless agricultural labor wage rate of unorganized sector labor, this has to improve again. The demand for Manrega work has not yet gone down sufficiently, which means that rural distress continues. The job for people in rural areas is still not sufficient. तो सर्वे क्लेम करते हैं कि हम चाहते थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्रो करना और कंस्ट्रक्शन ग्रो भी हुआ है इंडिया में, और कंस्ट्रक्शन के ग्रोथ का मतलब है कि लोग इंडिया आते रहे हैं. अब ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन के ग्रोथ का मतलब है कि जरूर लोग शहरों में आ रहे हैं गांव से उठकर और कंस्ट्रक्शन ग्रो कर रहा है, लेकिन वेज रेट नहीं बढ़ रहे, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है.
तो अगर आपके वेज नहीं बढ़ रहे और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो खरीदने की शक्ति कम हो रही है। अगर मैं 1,000 रुपए कमा रहा था पिछले साल और 1,000 रुपए कमा रहा हूं इस साल और इस बीच में दाम बढ़ गए 10% से, तो मेरे खरीदने की शक्ति 900 रुपए के बराबर हो गई। I hope you understand my point. So if I was earning 1,000 rupees last year and I'm earning 1,000 rupees this year and inflation is at 10% say, then what 1,000 rupees could buy me last year, only 900 rupees is what I will be able to buy with that worth of commodities. This is the trouble many workers in India are facing, and that is why saying that we have completely made a recovery in the pre-pandemic is not fully correct. Yes, ideal GDP, debt GDP ratio is 60%, center and state. शुभम श्रीवास्तव, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। सोचो एक बात, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई पिछले 10 साल से, स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई। कैसे? सो डोंट गो बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन इज अ बिग एनिमी, ऑलवेज गो बाय थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। Agricultural growth, agricultural GDP growth is happening because government is giving high MSP, because government has given other facilities like Operation Green, because there is higher amount of crop procurement done by the government, because global prices of food grains have gone up. So agricultural, because fishery production has gone up, poultry production has gone up. So agricultural growth looks positive. But workers working in agriculture are not benefiting because the big landlords, the profit-making class, agribusiness industries, financial technologies in agriculture are the gainers of this growth. तो ये समझना तुम, ये जरूरी है। Wonderful, you know, my wife will get very happy making me speak like this. I sound like a nice person left of center. तो उनको खुशी होगी कि मैं आज ठीक खाना खा के बातचीत कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि जो गेन है वो बड़े लोग उठा रहे हैं, छोटे लोगों को नहीं मिल रहा। तो बड़े बिजनेसमैन की तो इनकम बढ़ रही है। इसी में तुम सोचना, इंट्यूटिवली तुम्हें अगर बोलूंगा अदानी की इनकम बढ़ गई, उनके वर्कर्स की कम हो गई, झट से मान जाओगे। तो ऐसे ही मानो कि बिग लैंडलॉर्ड की इनकम बढ़ गई और छोटे किसान, लैंडलेस लेबर, उनकी इनकम कम हो गई। आई होप शुभम यू गेट द क्लैरिटी ऑन दिस टॉक।